Hello dear students, let us learn how to get the square root of 450 by estimation method. I hope you have learned how we apply the estimation method. So here step 1 is we are going to think of two square numbers between which this number 450 lies. तो हमें कोई दो स्क्वायर नंबर्स सोचने हैं, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए वो, जिनके बीच में ये 450 होगा. तो 450 हम यहाँ से क्लू ले रहे हैं, 400 सोच सकते हैं. 400 इज द स्क्वायर ऑफ 20. देन 21 स्क्वायर इज 441. 22 square is 484, and we observe that 450 lies between 441 and 484. तो सबसे पहला हमारा ये थिंकिंग प्रोसेस होता है. दिस इज स्टेप 1. On the basis of this observation, we write one statement, and the statement is 450 lies between 21 square and 22 square. Now the second step. From here, this statement, we can say that, we will write this, we can say that square root of 450 will lie between 21 and 22. Okay, now what we will do, we will take a number between 21 and 22 to get the closer number to 450, so that we are able to estimate square root of 450. So between 21 and 22, let us take 21.5. This is average of 21 and 22. So 21.5. So 21.5 into 21.5, find the square, we get 462.25. Now tell me 462.25, ये नंबर 450 से बड़ा है कि छोटा है? Of course it is more than 450. So we can write here one more mathematical statement, that 450 will lie between 21 square and 21.5 square. Right? After this, we will take another number. So let us take 21.3 to get more closer answer. So 21.3 square will be 453.69. अब ये 453.69 भी 450 से बड़ा है. So we write another statement here. Therefore, 450 lies between 21 square and 21.3 square. अब एक और नंबर लेते हैं, 21.2 square. Let us see. 21.2 into 21.2, and we get the answer as 449.44. Now this number 449.44 is smaller than 450. So in place of 21 square, we will write here 21.2 square is less than 450 is less than 21.3 square. राइट. अब आप देखो, हम 1 डेसिमल प्लेस तक हमने क्लोजर आंसर निकालने के लिए ये प्रोसेस की. अब 21.2 स्क्वायर और 21.3 स्क्वायर में 450 के मोर क्लोजर कौन सा है, हमें वो पता लगाना है. हम क्या करेंगे, 453.69 विच इज स्क्वायर ऑफ 21.3, इसमें से 450 माइनस करते हैं, मेरे पास आया 3.69, और 450 में से माइनस करते हैं 449.44, एंड वी गेट हेयर
21.56। अब बताओ कौन सा क्लोजर है 450 के, 21.2 स्क्वायर या 21.3 स्क्वायर? Yes, 21.2 square is more closer to 450 than 21.3 square. You can write this statement here. Is more closer to 450 than 21.3 square. Therefore, estimated value of square root of 450 will be 21.2. I hope it is clear to you.